Hello everyone. So today we continue with our discussion on maxima and minima. And अगर आप लोग को याद होगा, I have already posted one video with relation to maxima and minima, and today we'll continue with another one. And this is again going to be, in fact, this is going to be a pure set theory question. तो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, दीज आर क्वेश्चंस जहाँ पे हमें वो एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाले वैल्यूज निकालने पड़ते हैं। तो मोर ऑफन देन नॉट उसका कुछ ना कुछ रिलेशन सेट थ्योरी से निकल ही जाता है। बट आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इट विल बी डायरेक्टली अ सेट थ्योरी क्वेश्चन। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन, राइट। तो अगेन माय एडवाइस वुड बी कि आप लोग वीडियो को पॉज में डाल दो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एंड उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। एंड इफ दैट डजंट हैपन, देन ऑफ कोर्स यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑल द 150 लीडर्स फेलिसिटेटेड एट अ समिट हैड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू द जजेस। सो दे वर ह्यूमिलिटी, ability to handle pressure, and a natural characteristics to prioritize their team ahead of themselves. So let's say prioritize. So broadly ये तीन qualities है। It was found that more leaders had humility than ability to handle pressure. So let's say humility more than handle pressure, which in turn was more than number of leaders with characteristics of prioritizing their teams ahead of themselves. So this was more than prioritization. The number of leaders with exactly one of these qualities was more than those with exactly two of them. Okay, exactly one जिनके पास ये quality है is more than exactly two. We'll put this separately, right? Which was also, so again the word which would always mean I'm referring to the last thing in the sentence. तो यहाँ पे last क्या था? Exactly two. So exactly two was also more than those with all three of these qualities. So it is more than all three. All right. It is also known that leaders who had the characteristics of prioritizing with their team ahead of themselves was more than those with exactly one of these qualities. So that would mean P is greater than this. तो ये पूरा ऑर्डर हमें मिल गया है क्वेश्चन, राइट। बट वी डोंट हैव एनी डेटा और कुछ। द ओनली थिंग वी नो इज टोटल पॉपुलेशन इज 150। अदर देन दैट एग्जैक्टली टू में कितने हैं, हाउ मेनी आर हम्बल लीडर्स, हाउ मेनी हैव द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, कोई टोटल कुछ नहीं दिया, राइट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, वन थिंग विच आई हैव सेड इन द फर्स्ट वीडियो एंड आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दैट दीज आर स्लाइटली एडवांस लेवल क्वेश्चन। अगर आपका प्रेपरेशन एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर। तो अगर आपका प्रिपरेशन बहुत इनिशियल लेवल पे है, आई वुड सजेस्ट अभी इसको ट्राई मत करो। यू कैन ट्राई अदर क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, यू कैन ट्राई दोज, एंड देन ग्रेजुअली जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे, देन यू कैन कम टू समथिंग लाइक दिस। All right, back to the question. What could be the highest number of leaders at the summit who could be having the characteristics of prioritizing their team ahead of themselves? तो मुझे ये प्रायोरिटाइजिंग वाले को मैक्सिमाइज करना है। सो लेट्स से, लेट मी मेक अ फिगर। एक वेन डायग्राम बनाते हैं तीनों सेट के लिए। लेट दिस बी ह्यूमिलिटी, लेट दिस बी हैंडल प्रेशर, एंड लेट दिस बी प्रायोरिटाइजेशन। लेट मी ऑल्सो लेबल द एरियाज। इसको हम बोलते हैं ए, बी एंड सी, E, E, F, G. H is not required। यहाँ पे H का वैल्यू 0 है। रीजन भी, all 150 leaders facilitated at a summit had at least one of the three qualities। तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास तीनों क्वालिटी नहीं है, राइट। नाउ दैट वी अंडरस्टूड दिस, अब आगे बढ़ते हैं। हमें प्रायोरिटाइज इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, राइट। व्हाट कुड बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ लीडर्स एट द समिट हु कुड बी हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। तो प्रायोरिटाइजिंग को हाईएस्ट करना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मुझे किसी भी एक सर्कल को मैक्सिमाइज करना है, देन इन अ वे मुझे बोला जा रहा है कि जी को भी मैक्सिमाइज कर दो, बिकॉज सी जी इज द मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ ऑल थ्री सर्कल्स। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जी में होंगे, दैट वुड एंश्योर दैट एच का जितना वैल्यू है या एच पी का जितना वैल्यू है विल ऑल्सो नेचुरली बिकम अ पार्ट ऑफ पी का वैल्यू। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू दैट।
तो हम पहले जी को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड टोटल 150 है. अगर तो यहाँ पे जी इज बेसिकली ऑल थ्री वाला कैटेगरी. अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज एग्जैक्टली 1, दिस इज एग्जैक्टली 2, अगर मैं तीनों में 50-50-50 बांट देता हूँ, देन आई कैन अंडरस्टैंड ये वायलेट कर रहा है हमारे कंडीशन से. दिस इज सपोज टू बी मोर, दिस इज सपोज टू बी लेस. तो क्यों ना मैं यहाँ से एक को ट्रांसफर कर देता हूँ. सो दिस विल बिकम 50 प्लस 1, दिस विल बिकम 50 माइनस 1, 49. तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. इधर 49 डाल देते हैं. अब मैं ट्राई करूंगा डी एफ को 50 डालने का. नाउ आई हैव टू एंश्योर दैट एच का वैल्यू हाईएस्ट हो, एच पी मोर देन पी. तो एच के दोनों एग्जैक्टली टू वाले रीजन में लेट मी पुट मोर वैल्यू देन ई का वैल्यू, बिकॉज ई इज पार्ट ऑफ एच पी एंड पी. तो नाउ इफ आई लुक एट 50 एग्जैक्टली टू में हमने यहाँ पे 50 डालने का डिसाइड किया है. 50 कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 3, बट नियरेस्ट पॉसिबिलिटी 50 का डिवीजन हो सकता है. इफ आई हैव लेट्स से 16 इंटू 3 इज 48. तो सपोज मैं 16, 17, 17 ऐसा डालता हूँ. तो लेट मी पुट 17 हियर एंड हियर. ये दोनों में 17 डाल देते हैं एंड इधर 16. व्हाई एम आई डूइंग दैट? बिकॉज मुझे पता है पी को मिनिमाइज करना है. मतलब इन तीनों में पी सपोज टू बी द लीस्ट, उससे ऊपर एच पी, उससे ऊपर एच होगा. तो जितना इवनली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैंने कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ए बी सी. तो ए बी सी यहाँ पे 51 है, राइट? तो लेट मी ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली. तो इधर 17, इधर भी 17, इधर भी 17. लेट्स सी वेदर दिस विल सेटिस्फाई आवर कंडीशन. हम एक बार ऐड करके देख लेते हैं. तो ये अगर हम एच का टोटल लेंगे 17 इंटू 3 51 प्लस 49 एग्जैक्टली 100 आ रहा है. ये एच पी का अगेन दिस इज 17 34 एंड 50 एंड 49, तो ये 99 आ रहा है. एंड पी we are getting again 34 and 60, 50 and 99. ये भी 99 आ रहा है. एंड तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रॉब्लम. मुझे पी को एच पी से थोड़ा सा कम रखना है. तो ऑफकोर्स आई ट्राई टू डू दैट. बट अब मुझे बाकी कंडीशन भी देखने. ए बी सी कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी एज पर दिस वर्किंग इज 51, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं. डी ई एफ एग्जैक्टली 2 इज 50 एंड जी इज 49. तो सब कुछ फिट बैठ रहा है. बस ये पी को मुझे थोड़ा सा कम करना है ना. अगर मैंने पी को कम करके यहाँ दैट मीन्स सी से वैल्यू बी में ट्रांसफर कर दिया, देन एच पी और एच इक्वल बन जाएंगे. तो बेस्ट वे इज इधर एक -1 कर दो एंड इधर एक +1 कर दो. सो नाउ व्हाट हैपेंस? ये 18 हो गया, दिस बिकम्स 16 एंड टोटल्स कैसे इफेक्ट हो गए? दिस विल बिकम 101 एंड दिस वुड बिकम 98 एंड बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा. ए बी सी में भी कोई चेंज नहीं आया बिकॉज मैंने सी से उठा के वैल्यू ए में डाल दिया. सो ए बी सी विल कंटिन्यू टू बी 51, डी एफ विल कंटिन्यू टू बी 50 एंड दिस विल कंटिन्यू टू बी 49. So the maximum value of the number of leaders at the summit who could be having the characteristics of prioritizing their team ahead of themselves, that would be 98. So that is the answer to our question, 98. Right. Let's go ahead. Let's try the next question. सेम डेटा है, सब कुछ सेम है. अगेन लेट मी जस्ट नोट डाउन द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था. लेट मी ड्रॉ फिगर फर्स्ट. एच, एच पी एंड पी. इफ यू रिमेंबर एकदम सेट थियरी के जो वीडियोस मैंने डाले थे वहां पे आई हैड टोल्ड यू दैट हमेशा लेबलिंग इस तरह से करना. ए बी सी डी ई एफ जी. यहाँ एच तो है नहीं, अदरवाइज एच यहाँ बाहर आ जाता. इस ऑर्डर में रखना बिकॉज दैट वे यू रिमेंबर व्हाट इज एग्जैक्टली 1, व्हाट इज एग्जैक्टली 2, ऑल 3. वो फेमिलियरिटी रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा. नाउ क्वेश्चन में बोला है एच इज ग्रेटर देन एच पी, विच इज ग्रेटर देन पी, विच इज ग्रेटर देन ए बी सी, which is exactly 1, which is greater than DEF, which is greater than G, right? Now they are asking what could be the least number.
तो लोएस्ट नंबर ऑफ लीडर्स एट द समिट हु कुड हैव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, मुझे ह्यूमिलिटी को मिनिमाइज करना है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ह्यूमिलिटी को आप जितना भी मिनिमाइज कर लो, इट इज सपोज टू बी द हाईएस्ट अमंग ऑल दीज वैल्यूज. तो एक लेवल के बाद आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे. तो लेट्स सी व्हाट इज द लोएस्ट वी कैन डू. अब ह्यूमिलिटी अगर मुझे मिनिमाइज करना, आई शुड अंडरस्टैंड दैट जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला था, अगर कोई भी एक सर्कल को मैक्सिमाइज करना है मींस जी को मैक्सिमाइज करना है. सिंस ह्यूमिलिटी को मुझे मिनिमाइज करना है, आई ट्राई टू मिनिमाइज जी. तो लेट्स बिगिन बाय पुटिंग जी एज 0. तो जी को 0 डाल देते हैं. अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, लेट मी बिगिन बाय पुटिंग 25 एवरीवेयर इवनली ए बी सी डी ई एफ, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है 150. तो मैं 25 सब जगह डाल देता हूँ. ऑफ कोर्स दिस विल नॉट गिव मी द आंसर, बट दिस कैन बी माई स्टार्टिंग पॉइंट. अब इससे क्या होगा, लेट्स सी. एच का वैल्यू अभी, लेट मी पुट इट ओवर हियर, एच का वैल्यू है अभी 75, एच पी भी 75, पी भी 75, ए बी सी भी 75, डी एफ भी 75 एंड जी इज 0. राइट, तो मैं जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कर दिया मैं. नाउ आई नीड टू मेक श्योर दैट ए बी सी इज ग्रेटर देन डी एफ. तो व्हाट आई कैन डू इज परहैप्स, एंड इधर मुझे ऑलरेडी दिख रहा है एच को मुझे मिनिमाइज करना है, बट देन एच इज ऑलरेडी इक्वल टू एच पी एंड पी. तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू माइनस करके एच पी में ट्रांसफर करता हूँ, देन दैट विल वैलिडेट द कंडीशन. तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से जी में थोड़ा सा वैल्यू डाल देते हैं. तो लेट्स से डी ई और एफ तीनों से अगर हम एक एक वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 3 एंड इधर हो जाएगा -1. ये 24 24 24 हो गया. दैट मीन्स डी ई एफ से -3 72 हो गया ये, एंड जी पे +3 हो गया. राइट, इससे टोटल पे क्या फर्क पड़ा, अगर एच का टोटल देखोगे, डी से जी और एफ से जी जब जा रहा है, एच का टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ई से जी में आ रहा है तो एक बढ़ गया, तो दिस बिकम्स +1. सिमिलरली एच पी में भी एक बढ़ गया बिकॉज एफ से एक वैल्यू आ गया, एंड पी में भी एक बढ़ गया. तो 76 76 76 हो गया, ये 75 है, ये 72. तो अभी भी आई नीड सम सॉर्टिंग टू बी डन, बिकॉज एच पी पी एच पी एच पी एंड पी ये तीनों अभी भी इक्वल है. सो नाउ लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू अ -1 यहाँ पे सी वाला में. उससे क्या होगा, पी का एक वैल्यू कम हो जाएगा एंड उसको मैं एच में ट्रांसफर कर देता हूँ. सो नाउ व्हाट हैपेंस, 25 -1 ये 24, तो ये -1 होके ये कट गया, इस पे एक और +1 आ गया. सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज, एंड सी से मैंने बी में डाला है तो ये 75 पे ही रह गया. तो अब मेरा हो गया है यहाँ पे 70, लेट मी पुट इट इधर ही, ये 75 +1 76 +1. तो इसको मैं काट के टोटल लिख देता हूँ, 77 हो गया, ये हो गया 76, ये हो गया 70. अच्छा, ये 75 पे ही है, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. एक जो +1 हुआ था वो कट काट के हमने ट्रांसफर कर दिया, वापस 75 पे आ गया ये. एंड ये 72, ये 3, एवरीथिंग इज फाइन. द ओनली प्रॉब्लम इज ए बी सी भी 75 है एंड पी भी 75 है. तो लेट मी सॉर्ट दिस आउट. हम जी का हेल्प ले लेते हैं, यहाँ पे एक और -1 कर देते हैं एंड यहाँ +1 कर देते हैं. उससे क्या होगा, नाउ अब मैं आपके लिए फ्रेश सेट बना देता हूँ सो दैट द कंफ्यूजन इज क्लियर. So after all the pluses and minuses, H, HP and ये P, right? तो after all the pluses and minuses अब वैल्यू जो हो जाएगा उसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं. मैंने इवेंचुअली इसको बना दिया 26, इसको बनाया 24, दिस इज 25, these two are also 24 each.
बट सी से मैंने 2 बार माइनस किया, सो दिस विल बिकम 23 एंड दिस वुड हैव बिकम 4. नाउ फॉर योर सेटिस्फैक्शन आप एक बार ऐड करके चेक कर सकते हो दैट इट इज कमिंग टू 150 और नॉट. एच का टोटल कितना हो गया? इट विल बिकम 50 एंड 30 एंड 48, दैट इज 78 हो गया ये. HP का टोटल विल बी 77. P का टोटल 75. एंड लेट्स चेक ABC कितना हो गया. ABC, so A plus B plus C is equal to, we have 49, 54, 74. Then DEF is 72, G is 4. सब कुछ ऑर्डर में है. H greater than HP greater than P, which is greater than ABC, which is greater than 72 and 4. So we have satisfied this. We have just managed to satisfy this. So answer to this question, the least number of leader at the summit who could have the quality of humility, the answer to that question will be 78. That is the bare minimum we are getting over here, right? Okay, let's try the next question. Third one. Again, जो primary conditions है मैं short में जल्दी से लिख देता हूँ. G. Right. What is the maximum number of leaders at the summit who could be having humility? अब मुझे humility को maximize करना है. पिछला बार minimize करना था. So let's try and maximize that. Again, similar labeling. देखो, ह्यूमिलिटी को मुझे मैक्सिमाइज करना है. ह्यूमिलिटी इज द टॉप मोस्ट वैल्यू एंड आई हैव टू सैटिस्फाई दीज कंडीशंस, राइट? तो अब अगर यही करना है, देन लेट मी ट्राई एंड पुट एवरीबडी इन दैट सेट ऑफ ह्यूमिलिटी. तो बेस्ट वे अगेन वी कम बैक टू द आइडिया कि जी को मैक्सिमाइज करना है. देन आई विल ट्राई टू पुट 49 हियर एंड गुड थिंग इज जो 49 जी में आएगा वो ऑटोमेटिकली ह्यूमिलिटी का पार्ट हो जाएगा. अब मुझे ट्राई करना है डी और एफ को. डी और एफ को मैक्सिमाइज करने का. ई को मैं 0 दे दूंगा. वाई? बिकॉज मुझे एनीवेज सब कुछ एच के अंदर में रखने का ट्राई करना है. बट आई नो डी प्लस एफ, डी ई एफ शुड बी ग्रेटर देन जी. तो कम से कम 50 देना होगा. सो लेट्स से इफ आई गिव इट 50. नाउ आई होप वो 49 50 आपको याद आ रहा है. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड डन इन द फर्स्ट क्वेश्चन. 150 पॉपुलेशन है. अगर मैं इधर 50 देता हूँ, इधर 51 एंड इधर 49, दैट विल गिव मी अ परफेक्ट 150, राइट? तो जी का मैक्सिमम 49 हो सकता है. दिस इज प्योरली व्हाट वी हैव डन इन द फर्स्ट क्वेश्चन. उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राइट? तो डी और एफ लेट मी पुट यहाँ पे 50, यहाँ पे 0, बिकॉज मुझे एचपी को ग्रेटर देन पी बनाना है. एंड बाकी पूरा 51 को मैं ए में डाल देता हूँ. तो पूरे 150 लोगों को मैंने असाइन कर दिया. बट अभी तक ये आंसर परफेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज एच का टोटल तो हो गया. टोटल दिस इज 150. HP का टोटल हो गया 99, बट P का टोटल है 49, विच इज इक्वल टू, विच इज एक्चुअली इक्वल टू G एंड लेसर देन ABC. ABC अभी हमारा है 51, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो हमें P का टोटल जैसे भी हो बढ़ाना होगा. अब मैं G को तो डिस्टर्ब कर नहीं सकता. व्हाट आई विल डू, ये D और F का जो वैल्यू है इसी को एडजस्ट करूंगा. सो दिस इज सपोज टू बी मोर देन 51. ABC का टोटल है 51, उससे ज्यादा तो 52. ऑलरेडी प्रायोरिटी वाला जो सर्कल है उसमें 49 है. लेट मी ऐड 3, लेट मी पुट 3 यहाँ पे. तो इधर अगर 3 करता हूँ तो इधर -3 करके इसको 47 कर देते हैं, राइट? नाउ दैट वी हैव डन दिस एडजस्टमेंट, लेट्स सी अभी क्या होगा. इफ यू नोटिस एच का टोटल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. वो डी से एफ में ट्रांसफर हुआ, बट ये सर्कल का टोटल विल रिमेन 150.
HP का टोटल थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, इट वुड बिकम 96 now. 47 plus 49, let's put 0 here, let's put 0 here as well. तो ये 96 हो गया. And P का total, let's see, this has become 52. ABC continues to be 51. Then DEF, which is exactly 2 वाला area, that is 50. And G is 49. ये सब कुछ satisfy कर रहा है. This is 52, this is 96, and this is 150. So what is the maximum number of leaders at the summit who could be having humility? The answer to the question, of course, is 150, all of them, right? Now, I'm not saying this is the only way of doing it. आप और भी breakup कर सकते हो. For example, 47 and 3 नहीं करके आप इसको 46 4 कर सकते हो, 45 5 कर सकते हो. Many possibilities. But at the end of the day, मुझे इसको maximize करना है, and the maximum value is 150. So that is indeed the answer, right? Now, coming to the last question. What could be the minimum number of leaders at the summit who could be having the characteristics of prioritizing their team ahead of themselves? Now, to be honest, this question is very much related to the previous question. मुझे minimize करना है those people who are prioritizing themselves ahead of prioritizing their team ahead of themselves, right? तो ये P वाला circle को minimize करना है, and that is turning out to be 52, because मैंने यहाँ पे वही satisfy किया है, ABC greater than DEF greater than G. अब आप बोलोगे कि क्यों G में इतना 49 रखना है, उसको हटा दो यहाँ से. उसको हटा के हम कहाँ डालेंगे? इफ आई पुट इन ABC और DEF, द पॉइंट इज आप ABC को ज्यादा बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली आपको P का सर्कल को भी बढ़ाना होगा, बिकॉज P इज सपोज टू बी ग्रेटर देन ABC. तो आप इसको G से हटाकर इवन इफ यू ट्रांसफर टू DEF और ABC, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. इवेंचुअली आपको इसको बढ़ाना ही पड़ेगा. सो इवेंचुअली आप क्या होगा, आपको C को बढ़ाना होगा. अल्टीमेटली 52 से ज्यादा, 52 से कम आप नहीं ला पाओगे इसको, right? So the answer continues to be 52. You can try it in different ways, and of course, if you have any doubt, you can put it in the comments as well. I'll try to respond to that. All right, hope this was clear. Thank you, everyone.